Hello everyone, this is Umama Naeem Khan, your physics faculty at Goprep, and I'm here with you to have the solution, discussion and the paper analysis of slot 2, class 10th GTSE 2020. अगर अभी तक किसी ने नहीं दिया है GTSE, then you can definitely attempt it in the next slot. The link is given in the description, बच्चों. Let us proceed towards the discussion of the paper. Okay, here is the first question. There's a wire whose resistance is R and it is cut into 3 equal parts. तो जब हम R resistance वाले को 3 equal parts में कट कर देंगे तो हर एक पार्ट का resistance कितना हो जाएगा? R by 3, R by 3 and R by 3. Okay. If they are arranged in parallel and the equivalent resistance that we get is R dash, then what will be the ratio of R upon R dash? Okay, let us see. अगर ये R by 3, R by 3, R by 3 तीन रेजिस्टेंस है और इन तीनों को हम पैरेलल में लगाते हैं तो 1 upon R dash is equal to, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 3 by R, 3 by R, 3 by R. This will give you what? 9 upon R. 9 upon R is the value of 1 upon R dash. तो यहाँ से R dash की वैल्यू कितनी आएगी? R upon 9. हमें रेशियो किसका निकालना है? R upon R dash या R upon R, another R dash is equal to R upon R dash की वैल्यू कितनी? R upon 9. तो 9 चला जाएगा ऊपर, मतलब R into 9 by R से R कैंसिल, आंसर आ जाएगा 9. That is option number C. Okay. So there is another question. 4 set of observation are taken. Identify the correct observation. Okay. So there is a circuit and in that circuit there are 2 points A and B. आप देख सकते हैं A में नीचे की तरफ करंट जा रहा है और B में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है. हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है. तो सबसे पहले तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इफ दिस इज लाइक दिस इज अ वायर एंड यू आर होल्डिंग इट इन योर हैंड, राइट? तो आपको जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी that will give you the direction of magnetic field. Thumb will point towards the direction of current and the curl of your fingers, ये curl of your fingers will give you the direction of magnetic field B. ठीक है? ठीक है भाई. अब ध्यान दीजिए, B में करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर. जब आपके सामने एक सर्किट होगा और आप B में करंट ऊपर, B वाले एंड को ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर करंट, और देखिए ऐसे बाहर रखा है ना, इस वायर के बाहर पॉइंट है B. तो जब बाहर पॉइंट B है तो मतलब कैसे आएगा? देखिए कर्ल कैसे कर रही है, ऐसे आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब पेज से बाहर निकल रहा है. सिमिलरली पॉइंट A की अगर बात करेंगे, ये लाइन है, यहाँ पॉइंट A है, करंट कहाँ है? नीचे. अब देखिए A लाइन के बाहर वाला पॉइंट है, ये देखिए ये बाहर. करंट कैसा, वो सॉरी मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन नीचे, थंब मैंने नीचे करा, मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसी है? बाहर की तरफ. तो A और B दोनों पॉइंट पे फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है? ऐसे ऐसे. इसमें भी कैसे हो रही है? ऐसे और ऐसे, बाहर की तरफ निकल रही हैं. तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड. दैट इज पॉइंट नंबर डी. ठीक है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक स्टोन है, उसको हमने एक टावर से ड्रॉप कर दिया. ठीक है? टावर की हाइट कितनी है? 300 मीटर है. स्प्लैशेस इनटू द पानी है नीचे, पॉन्ड बना हुआ, उसमें गिर जाता है. व्हेन द साउंड ऑफ स्प्लैश बी हर्ड एट द टॉप. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है 340 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर इज बी. देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. देखिए आपको स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है बच्चों. हमने टावर की हाइट मान ली है, मान क्या लिया? हमको दी हुई है 300 मीटर्स. हमने यहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया है. ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. अब हम पहले ये नापें कि ये जो स्टोन है इसको ये पानी से टकराने में कितना टाइम लग रहा है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है. तो सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. देखिए यूटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ, या A किसके बराबर है? G के बराबर कितना? 10 और T का स्क्वायर.
एस की वैल्यू कितनी है 300 मीटर्स। ये देखिए 2 5 10 5 टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आएगा देखिए 300/5, 5 6 30 60, ठीक है। t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 60 जब आप निकालेंगे ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 7.75 सेकेंड्स। ये कौन सा टाइम है बच्चों? ये वो टाइम है जो स्टोन को नीचे जाके पानी से टकराने में लगा। तो जब पानी से वो टकराएगा तब स्प्लैश प्रोड्यूस होगा, पानी उछलेगा बाहर, फिर पानी जब ऐसे उछलेगा इसका साउंड ऊपर तक आएगा और आपको सुनाई देगा, यही है। अब साउंड जो है इस मोमेंट पे प्रोड्यूस हुआ और ऊपर तक आया, तो साउंड के लिए तो s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधे सीधे लगा देंगे, ठीक है। स्पीड कितनी है 340 है, डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, बिल्डिंग के ऊपर सुनाई देना चाहिए टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 300/340, यह आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.88 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये स्प्लैश के प्रोड्यूस होने के बाद आप तक साउंड कितनी देर में पहुंचा इसका टाइम है। आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है व्हेन विल द स्प्लैश ऑफ द साउंड बी हर्ड, मतलब कब पत्थर गिराया से लेके टकराया से लेके वापस साउंड आपको सुनाई दिया। तो वी हैव टू ऐड 7.75 एंड 0.88 and on adding both of them we will get 8.6 seconds. Okay. Next question. A ball falling from a height of 10 मीटर, 10 मीटर की कोई हाइट है, वहां से एक बॉल को आपने गिराया। अब क्या हुआ, ये 10 मीटर की हाइट से ये इस ग्राउंड पे बॉल नीचे आई, इससे टकराई और टकराएगी अगर, तो क्या होगा एनर्जी लूज करेगी, कितनी परसेंट लूज कर दी 20% लूज कर दी, और फिर ये वापस किसी एक हाइट तक राइज करेगी, ऐसे ही होता है। फिर वापस अगर आगे क्वेश्चन होता तो फिर वापस टकराती, फिर एक हाइट तक, ऐसे धीरे धीरे क्या करती अपना एनर्जी लूज करती जाती। तो आपसे बोला जा रहा है जब वो पहली बार टकराई और उसने 20% एनर्जी लूज की, उसके बाद वो किस हाइट तक पहुंचेगी, ठीक है। देखिए इसको कैसे समझना है। अगर उसने 20% एनर्जी लूज करी है, इसका मतलब बच्चों उसके पास कितनी बची 80% एनर्जी बची है, और किसकी 80%, जो उसके पास यहाँ पे ये 10 मीटर की हाइट पे mgh पोटेंशियल एनर्जी जो थी ना उसकी, वो उसकी 80% एनर्जी उसके पास बची है, और यही उसकी न्यू एनर्जी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी जब वो वापस से टकरा के किसी एक पॉइंट पे जाएगा। यहाँ पे भी तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये 80% ऑफ mgh नई एनर्जी के बराबर होगा, जो कि कितनी होगी वापस से mg और ये वाली कोई हाइट h, राइट h। हमें कैपिटल H ही निकालना है, mg और mg कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 80/100 इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.8 टाइम्स ऑफ h, कितना मीटर था 10 मीटर था, इक्वल टू h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है C 8 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें 3 वेसल दिए गए हैं और हमको बोला है सबका बेस एरिया सेम है, मतलब A का बेस एरिया B का और C का सेम है, और इन तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड आपने डाला है। तो आप बताइए कि फोर्स जो है ना वो किसके बेस पे मैक्सिमम होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, पहली बात तो बच्चों बेस एरिया सबका बराबर है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं इसकी वॉल्स जो है वो ब्रॉड होती जा रही है, ऐसे फैल रही है। इसकी वॉल स्ट्रेट है, जैसी नीचे थी वैसी ऊपर है, और इसकी जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर बीच में आती जा रही है। इसका कहने का क्या मतलब है बेटा, ए वाले फिगर में अगर वॉल्स ब्रॉड हो रही हैं तो स्पेस बढ़ रहा है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डाला, मैं मान लेती हूँ मेरे पास 1 लीटर ऑफ लिक्विड था और 1 लीटर मैंने तीनों में डाला, तो इसकी वॉल्स ब्रॉड हो रही हैं तो स्पेस ज्यादा हो रहा है। तो स्पेस ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो इसमें इतनी जगह में ही 1 लीटर फिल हो जाएगा। बी वाले की वॉल स्ट्रेट है, ए वाले के कंपैरिजन में कम स्पेस है, तो देखिए इसका कहीं यहाँ तक लिक्विड फिल हो जाएगा, ठीक है। सी वाला क्या कर रहा है, वो तो एकदम पास पास आता जा रहा है, स्पेस क्या हो रहा है बच्चों कम होता जा रहा है, तो सी वाला मान लीजिए यहाँ कहीं तक फिल होगा, ठीक है, क्योंकि सेम वॉल्यूम है लिक्विड का, एक का स्पेस ज्यादा फिर थोड़ा कम और कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर किस में आएगा बच्चों, सी वाले में आएगा।
मैक्सिमम हाइट सी वाले में आएगी। हमें पता है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। और हाइट ऑफ लिक्विड मैक्सिमम किस में है, सी वाले केस में है। तो अगर हाइट ऑफ लिक्विड सी वाले केस में मैक्सिमम है तो प्रेशर मैक्सिमम किस में होगा, सी में होगा, ठीक। प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो बेटा सामने सामने लिखा है, मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू फोर्स है ना, जिसमें प्रेशर ज्यादा उसमें फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो मैक्सिमम इन सी, ओके, आंसर इज सी, ओके। अनदर क्वेश्चन वी हैव दैट देयर इज अ टैप, नल होता है वो है, ठीक है। उसमें क्या है, वो 10 मीटर ऊपर लगा हुआ है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, लीक कर रहा है, मतलब उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पकड़नी है वो ये है, दे आर लीविंग द टैप एट द रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब बेटा सबके बीच का टाइम डिफरेंस सेम है, ठीक है। When the first drop reaches the ground, the fifth drop is about to leave the tap. जब पहला वाला ग्राउंड में पहुंच रहा होगा तो फिफ्थ वाला जो है वो नीचे, मतलब टैप से लीव करेगा, निकल रहा होगा। तो थर्ड और सेकंड वाले ड्रॉप में कितना डिफरेंस है, सेपरेशन कितना है। देखिए इजी है, इसको समझते हैं ड्राइंग से। देखो एक टैप लगा है, अब मैंने फर्स्ट वाला ड्रॉप जब ग्राउंड पर पहुंचा दिया तब फिफ्थ वाला इज अबाउट टू लीव, ठीक है। 10 मीटर की हाइट है, तो अगर फर्स्ट वाला पहुंच रहा है ग्राउंड पे और हम ये निकाल लें कि कितनी देर में पहुंच रहा है, तो पहले तो टाइम निकाल लेंगे हम फर्स्ट वाले का, जितनी देर में वो नीचे ग्राउंड पे पहुंच रहा है। कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी बिकॉज इट इज लीविंग द टैप, तो S क्या है 10, ये हो गया 0 प्लस हाफ, A कितना हो जाएगा, G के बराबर 10 T का स्क्वायर। सो 2 5 10, फ्रॉम हेयर T स्क्वायर इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 सेकेंड्स। इस टाइम से हम क्या समझते हैं, ये वो टाइम है जो पहले ड्रॉप ने लगाया टैप से निकल के ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। और सारे ड्रॉप्स इक्वल इंटरवल पे लीव कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला T टाइम जो है ना √2, यही इन पूरे टाइम डिफरेंस में डिवाइडेड होगा। मतलब अगर √2, ये देखो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में कितने टाइम स्लॉट आ रहे हैं, 1 2 3 4, और हर इंटरवल बराबर है, तो ये जो √2 पूरा टाइम है इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो हर दो ड्रॉप के बीच का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो T है √2 और फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में 4 टाइम डिफरेंस है, तो मैंने T लिखा √2/4, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 सेकेंड्स। मतलब ये जो T है ना इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 ये वाले T की भी वैल्यू कितनी है, 1/2 मतलब टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 ड्रॉप्स इज 1/2, ठीक है। ये वाला टाइम इंटरवल है। आपसे पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस है बिटवीन द थर्ड एंड द सेकेंड ड्रॉप, ठीक है। बच्चों देखो ध्यान से, ये वाला सेकेंड है और ये वाला थर्ड है, ठीक है। तो देखिए S इज इक्वल टू यू टी, इसमें वही 0 हाफ AT स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगा थर्ड वाले का भी और ऐसे ही निकलेगा सेकेंड वाले का भी, हाफ AT स्क्वायर। क्या डिफरेंस आने वाला, देखो A तो G के बराबर हो जाएगा, T कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे T एक के लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 1/2 सिमिलरली थर्ड वाले ड्रॉप के लिए टाइम क्या आ जाएगा, 3 × 1/2, राइट। सो इफ यू विल पुट इन दिस फॉर्मूला, सो ये क्या आ जाएगा, हाफ GS की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सो 3 × 1/2 का स्क्वायर, T स्क्वायर करना है ना, माइनस 2 × 1/2 का स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं हम, थर्ड वाले का टाइम माइनस थर्ड वाले का डिस्टेंस माइनस सेकेंड वाले का डिस्टेंस। तो थर्ड वाले का डिस्टेंस देखो यही वाला हुआ, सेकेंड वाले का यही वाला हुआ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं, इसलिए हाफ GT स्क्वायर फॉर थर्ड पहले लगाएंगे, फिर सेकेंड लगाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25/8 मीटर्स। दैट इज योर ऑप्शन नंबर A. ओके,
So what we have to do in this question, you have to use only second equation of motion, जिसे आप पहले टाइम निकालोगे, फिर वो टाइम के लिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि सबके बीच का इंटरवल सेम है. इंटरवल मतलब टाइम डिफरेंस सेम है, तो पूरे टाइम को 4 टाइम इंटरवल में डिवाइड करेंगे. 1/2√2 सेकेंड्स आ गया बच्चों. तो सबके बीच में 1/2√2 सेकेंड्स का डिफरेंस है. डिस्टेंस निकाल के माइनस कर दीजिए. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द फिजिक्स पोर्शन ऑफ द पेपर. लेट अस मूव टुवर्ड्स केमिस्ट्री. हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. अभी आप सब लोगों का GTSE का स्लॉट 2 होके चुका है. आई एम प्रीटी श्योर वो बहुत ही अच्छा रहा होगा. सो आई योर केमिस्ट्री टीचर हियर एट गोप्रेप खंडेलवाल इज ब्रिंगिंग द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द केमिस्ट्री क्वेश्चंस. सो लेट्स क्विकली बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था, द आयन X जो है उसने +2 चार्ज एक्वायर किया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो यू कैन सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, मास नंबर 24 है. We all know कि हमारे पास जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट. मास नंबर 24 है, न्यूट्रॉन्स 12 है, तो कितने प्रोटॉन्स हो गए? 12 प्रोटॉन्स आर देयर. अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होते, लेकिन क्योंकि इसने +2 चार्ज एक्वायर कर लिया है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. कुछ नहीं होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज रहे. क्यों? क्योंकि इसने +2 चार्ज एक्वायर किया है. The next question was about your conjugate acid base theory. So conjugate acids वो होते हैं जो H+ आयन Bronsted acids वो होते हैं जो H+ आयन्स देते हैं. Bronsted bases वो हो गए जो H+ आयन्स एक्सेप्ट करते हैं, राइट. सो NH3 इज अ Bronsted base. तो हम उसे जब वाटर से ट्रीट करते हैं, सो बेसिकली हमारे पास इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है. दिस शोज कि वाटर जो है उसने अपना H+ आयन जो है वो अमोनिया को दे दिया है. दैट मीन्स अमोनिया इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस. ठीक है, वो आपका कौन है? ब्रॉन्स्टेड बेस है. अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कॉन्जुगेट एसिड निकालना होगा. बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होता है. सो NH3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? NH4+, व्हिच कम्स आउट टू बी द कॉन्जुगेट एसिड फॉर दिस. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था. इसमें आपको एटॉमिक मास बताना था A और B का रिस्पेक्टिवली. कुछ नहीं करेंगे, इसमें सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं. That is in terms of grams per mole, right? So A2B3 में आपका कितना है? 32 divided by 2.02, and A3B4 में कितना है? 92.8 divided by 0.4. ठीक है, आप इसे सॉल्व करते हैं. When you solve it, it comes out to be almost, this comes out to be your 160 grams per mole, and दूसरा आ जाता है आपका 232 grams per mole. So 160 grams per mole and this 232 grams per mole. अब हमारे पास यहां से 2 इक्वेशंस आ जाए, जिस तरह की मैथ्स में इक्वेशंस होती है वैसी ही. सो हमने A और B कंसिडर कर लिया है, राइट. सो हम उस A और B को कैसे लिखेंगे? आपके पास A2B3 फॉर्मूला है. सो यू विल राइट इट 2A plus 3B. ओके, बेसिकली 2A plus 3B is equals to 160, एंड इसमें कितना होगा आपका 3A plus 4B is equals to 232. These are the two equations. यहाँ से आप A और B की वैल्यू easily solve out कर सकते हो, and you get the correct answer upon solving as option C. So this was a very, very interesting question. The next is a very simple question. The substance starts to precipitate out when a small amount of the same substance is added to the solution. हम सबको पता है सॉल्यूशन को जब हम सामान ऐड करते जाते हैं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद, लेट्स से पानी में हम शुगर ऐड कर रहे हैं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद पानी में शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड. Suppose that when you add more upon heating, what happens? आपका सॉल्यूशन आप हीट करते हो, फिर और ऐड करना शुरू करते हो, और लेना स्टार्ट डिसॉल्व करता है, एंड फाइनली लिमिट इज रीच, जिसके बाद वो प्रेसिपिटेट आउट शुरू हो जाता है. दैट इज नोन एज योर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज सुपर सैचुरेटेड. द नेक्स्ट वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर बोथ कैथोड एंड एनोड के लिए, रेज के लिए. सो दोनों ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिल्कुल सही. मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है, ठीक है. उन्हें वो बेसिकली मटेरियल पार्टिकल्स भी कहलाते हैं. सो यस, बोथ ऑफ देम आर मेड ऑफ कैथोड इलेक्ट्रॉन्स, एनोड प्रोटॉन्स, ठीक है, तो वो भी सही है. एंड दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है. बट दे हैव द सेम, द वर्ड हियर सेम,
makes a difference. They have got the same charge to mass ratio. नहीं, दोनों का चार्ज भी अलग है. तो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का बना है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे, राइट. सो डिफरेंट चार्ज टू मास रेशियो है, इसीलिए इसका स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Thus the correct answer for this is option C. The next question was, Ankit heated the hydrated salt of your sodium sulfate and observed 55% loss in the weight on heating as it becomes anhydrous. The value of Y is what? मतलब ये आप सबको मैंने बताया भी है, क्लासेस में भी हमने करवा रखा है कि जब भी हमारे पास ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होगा तो सोल्यूशन एनहाइड्रस बन जाता है, राइट. तो पानी का लॉस हुआ है, 55% लॉस हुआ है. बहुत ही सिंपल सी चीजें समझने वाली, ठीक है. 55% का लॉस है तो दैट मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स Y के निकले होंगे. ओवरऑल 55% वेट में चेंज आया है. सो हम बस ओवरऑल वेट ले लेते हैं, ठीक है. हमारे पास कितना है, वाटर इज 18 ग्राम्स, तो 18 एक मॉलिक्यूल 18 का है तो 18 इंटू Y हो गया, ठीक है. डिवाइडेड बाय और हमारे पास टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल का कितना होगा. सोडियम इज 23, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16. जब ऐड करते हो हमारे पास तो 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, राइट. ये आपको सोडियम सल्फेट की सिर्फ बात कर रही हूं मैं, ओके. सो इट कम्स आउट टू बी 142 प्लस टोटल मॉलिक्यूल का है तो 18Y भी आएगा बिकॉज वाटर भी है, फाइन. सो इसको जब आप सॉल्व करते हो, अपॉन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Y एंड दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन A, 10. Okay, so this is another very interesting question that you had. The next was, nitrogen was allowed to react with oxygen under different condition. It results in the formation of following oxides. So जब भी इतने सारे oxides बन रहे हैं, इसका अगर आप रेशो निकाल के देखते हो, so नाइट्रोजन आपके पास कितना है, 28 ग्राम्स है, फिक्स्ड है. ऑक्सीजन किसी में आपका ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, 16 है, ठीक है. किसी के अंदर आपका ऑक्सीजन 16 आ जाता है, किसी के अंदर आपका ऑक्सीजन 32, किसी में 48 है, किसी मॉलिक्यूल में, किसी में 80 ग्राम्स है. सो रेशियो ऑलमोस्ट कम्स आउट टू बी 1:2:2:3:4:5. दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट यू थॉट इज द मल्टीपल प्रोपोर्शन. वैसे भी मल्टीपल वर्ड आ रहा है, मल्टीपल ऑक्साइड्स बन रहे हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन. So the correct answer for this is option C. Another question of your class 9th. So I am sure आप सब लोगों का GTSE का पेपर बहुत ही अच्छा रहा है. अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है बच्चा तो जल्दी से नेक्स्ट स्लॉट में अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है. Now we'll be moving towards the next section. Thank you. Hey guys, I hope आपका पेपर GTSE का काफी अच्छा गया होगा. Let us quickly discuss the questions जो हमारे GTSE में आए, and I am very sure you people must have done a fabulous job. Endomembrane system consists of, now you know endomembrane system is the protein traffic controller. Starts from endoplasmic reticulum, then you have a little bit of vesicles which get it to the Golgi complex, and then lysosomes are also formed, and vacuoles also are components of the endomembrane system. So you can see 1, 2, 3 and 4 are all the answers except for 5. That means the correct answer is D. Pretty simple, right? Which of the following tissue is devoid of nucleus? Now we know many kinds of cells, they leave out nucleus, they throw out nucleus, like the red blood cells and the sieve tubes, because the sieve tubes have to allow the flow of sap. The correct answer here is B. Increase in girth or diameter, that means we are talking about the cambium, also called as the lateral meristem. Now, the increase in cambium in later stages of life of plant body is called. Now, you know it's secondary. Secondary means it's not present in the plant from the very beginning, right? So, it's secondary growth, a growth which comes from secondary meristems, that is the cambium or the lateral meristem. Which among the following is a ciliated protozoan? Now, यहाँ पे थोड़ा fact based question हो गया, but come on guys, you have been studying paramecium since God knows, you know. So entamoeba is a plasmodium type organism. It has got pseudopodia. Trypanosoma has got flagella. Plasmodium again hasn't got any organ, right? Or sorry, a structure for locomotion. So correct answer is paramecium.
The disease caused by the bacterium and is sexually transmitted. Bacterium, right? Now I know यहाँ पे आपको लगा होगा यार बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, but बेटा थोड़ा सा करना पड़ेगा, right? So gonorrhea and syphilis, treponema pallidum and Neisseria gonorrhoeae, right? These are the causative agents for these two sexually transmitted diseases which are caused by bacteria. Assertion reason question, बहुत लोगों को इसमें डर लगता है. There is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood in the human heart. Correct. The right part of the heart carries the oxygenated blood and the left part of the heart carries deoxygenated blood. Right? Ab assertion is correct. Ab reason सोच लो. Veins are present in the heart which allow the movement of blood in one direction. Beta, veins are present in the heart. True statement. It maintains unidirectionality, that is also a true statement, but it is not a correct explanation, right? The separation is brought by the septa, the wall in between the right and the left chambers, right? So both are the correct statements, हालांकि explanation assertion का reason नहीं है. Epiglottis, आप सब पढ़ते हो windpipe के सबसे ऊपर epiglottis होगा. Why? Because we don't want कि जो हमारा air passage है उसमें आपका गलती से खाना चला जाए, right? So epiglottis shuts the air passage. Larynx is a part of the air passage, so it prevents or protects larynx from any entry of food. Now I am very sure बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया होगा. Let us now try to understand questions mathematics के. Will soon be here. Hello guys, welcome to the math section. So if you haven't attempted the test yet, you can do it in the coming slots, and that is slot 2 and 3. And my name is Rohan. Let's start with the questions. For this question, it is given that a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, right? So in such questions, you just have to equate them to some another variable, let's say k, and take the powers to the other side, okay? Just look at this. C is the right answer, we all know. So, okay, so finally, if you just look at this, a to the power x, b to the power c, and c to the power z is equal to k, then you put the powers on the right hand side. So it will become 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z. Now, if you will add all these powers, that is a, b, c will be multiplying all these, will be adding all these powers. So if it is given that abc is equal to 1, right, abc is given as 1. So guys, you can already see that if x plus y plus z is given, so the denominator will be xyz and it will be xy plus yz plus zx. So if this is equal to 0, 0, that means the numerator is equal to 0. So therefore, we can conclude this from it. So yes, that's the right answer, 0 is the right answer. Let's go for the next question. This question also is a similar fashion, right? In similar fashion, we just have to change the denominator in such a way that we can finally get something which divides the numerator and denominator and get a number. We can just get an idea from the options, right? If you look at the options, they are mostly numbers, right? So there is one idea which is stuck to your mind, that we can finally convert this to some form of division in which we can cancel the denominator and the numerator. That's what I'm going to do. This is the right answer. Let's see how. So in this question, what I have done is very simple. I have just converted this negative powers to the denominator, and then if you write it again, you'll get x to the power a, x to the power b, x to the power c, and you'll divide it, you'll get 1. Right? It's very simple. So yes, B is the right answer. Now we can move to the 23rd question. The 23rd question is it is exactly similar to the first question, right? Here again, to compare all these, we have to convert them to, we have to take these square roots and cube root to the powers, right? If you just look at these powers, first of all, so 2 to the power 1 upon 2, 3 to the power 1 upon 3, and 6 to the power 1 upon 6. Finally, what we can see is, we have to convert all these denominators to same, so that we can compare all these powers, right? So we have taken the LCM of 2, 3 and 6, that comes out to be 12. So now if you change every fraction to such that the denominator is 12, so you'll get something like this. To the power 6 upon to the 12th root, and 3 to the power 4 to the 12th root, and 6 to the power 2 12th root. And now you can actually compare that this is going to be the largest, this is going to be the smallest, but which is not in the case given in the regions, right? In the 1 and 2 options, it is not the same thing. It is said that 6 root 6 is the greatest number, which is not here. We can simply see 3 root 3. So first is wrong and
Root 2 is given as the smallest. If you will check it, it is not the smallest is 6 to the power 1 upon 6. So both of these are wrong, so D is the right answer. This question is very simple. I just feel that you might not have wasted too much time on it. You simply find the ratios. Right? It is given. You convert it into an equation. Now, when in another scenario with 4 years ago, you simply do the changes in the necessary ratio. And if you will solve it, you will get this one. The second equation as this. This will be the second equation. Now, if you will solve both of these equations, you get 44 and 28. But the problem might lie here that what will be Deena says at 3 years hence. So that means you have to find out the age after 3 years, right? And so you have to add 28 plus 3, that will be 31 years, and that is going to be an answer. D is the right answer. Now in this question, very similar question, very simple question based on powers and exponent, which we have studied, which we have done in the previous question as well. Just look at these questions. Simple question, guys. You have to put everything to numerator first of all, and when we will add all these powers, because the base is same in all three terms, right? So it will be a. So finally you can see when we will add all of these powers, we will finally going to get a 0, and that means 8 to the power 0 is equal to 1. So that is the value. So guys, whenever you have been given these numbers in the options, try to make a guess that this could be true and start with such an approach, right? Try to find such an approach. You might get a number there also, okay? In any case, if it is not a number, you might be getting this and this and this. But if it is a number, let's try with that first. Now, this is again a similar question. We need to understand that if, let's say, a pipe is there from which the water is flowing. Let's say this is a pipe. The pipe looks like this. The water is flowing to a tank. So the length of it and the speed, the time in which it remains in the pipe is actually the volume, right? The volume will be considered that only. So whatever it fills, it will be. So just elongate the length of it. So that you get the appropriate time. कि कितने सारे टाइम में इसमें जितना पानी होगा वो इसके अंदर फिल हुआ है, right? And if you can actually find out the time, you can actually find out the speed as well, right? The length and the time, that will give you the speed, right? It's not distance here, okay? The water will be like that only, okay? Just look at the options. So what has been the volume of water that is flown into the tank? It is given, right? It is given. The time is given in hours and minutes. We have to first of all convert into hours. That is required so that we can get the speed, right? So now if we'll finally find out the volume of water flown through the pipe is exactly equal to the volume of water that has flown into the tank, right? There is no in between. So we'll solve it. We'll take the x as the length of the water flown through the pipe. So this would be, let's say this is the length, right? This is the length of the water. So complete length. We are taking the whole pipe. Just you have to imagine in such a scenario that the whole pipe acts as a container, okay? So the length of the water flown through be x meters, right? So this is x meters. You'll try to find it out. This is simple calculation. Try to do it. You'll get the answer. You'll try to solve it out. You'll get an answer. 26 into 5 into 100, and you'll solve it. The length of the water flown. What is the speed? So what is the length and the time it has flown into it? Okay, that will be the speed of the water flow, right? So yes, it is not the same as some vehicle which you can find the speed by traveling the distance. You can consider every part of water as that vehicle, right? So this will be complete length, right? This, let's say a part of water has traveled from this to this, right? In some time taken. Throughout it has acted as a water level in the pipe, right? So this is some conceptual thing which you need to understand, okay? So length of the water flown upon time taken as given as. If you will try to solve it out, you will get 10 kilometers per hour. So we have changed it in kilometers, and then it was actually in hours. So looking at the options, we have to convert into kilometers per hour, right? Okay, let's go for the next question. This question, very simple question, but it looks very difficult, right? Even if the solution which I have shown you, right, I will show you right now, will look very difficult, right? So this looks very difficult, but if you try to solve it out, you will find it very easy. And this is also very difficult to understand, right? But if you cancel 2 and a, 2a, you're going to get a very simple equation finally. And I'm saying you can try this. You'll get a very simple, this is very simple, not very tough. If you try to solve it out, you'll get it, right? This is not very difficult. First of all, a plus b will be out initially, right? You just have to multiply and subtract. That's all you have to do. So you'll get an equation like this.
The other equation is again very simple. It is bx plus cy is equal to a plus b. Bx plus cy is equal to a plus b. So either you can solve it with the elimination method, substitution method, or the cross multiplication method. So cross multiplication method is simply giving me the right solution at the same time. But I had time while doing it, right? But you don't have time, so you can actually apply elimination method, and that will be easier. So I've done it like this. You will finally get that the product of x and y will be a upon c. Okay. So looking at the answer, C is the right answer. Okay. Now look at this question. And this question is again very simple question, very simple question. You just have to compare the two volumes. Okay. Just look at this volume of the cylinder. We know pi r square h, and the volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. And it is said that it is converted into 48 spheres. So the volume, the ratio of the volumes must be equal to 48. Now if you will try to solve it, is also given that the radius is also equal to height. If you look at the question, it is said that the recast from the liquid metal, right, whose radius is and height are equal to each other, right? That's right. So the radius is also equal to the height for the cylinder. You will try to solve, you will get a cube equation in R1 and R2. And finally, you can do the cube root on both sides and get an answer. That is 4. So we have to find the ratio, and that is 4, 1 upon 4, right? Just have to check here. R1 upon R2 is given. What is the ratio? The ratio to ball, right? Upon. So we have actually found out the opposite of it, right? You have to understand that this R1 and R2 is the opposite of it, right? And we have to find out the ratio of the radius of ball to the ratio of cylinder, and we have actually done the opposite. So therefore we have got 4. So if you will try this, you have to understand this will be 1 upon 4 in your case. Okay. This question is very easy. You can just look at the options and you can actually answer this. You have to find out what is my. So if we can somehow prove that Ly is equal to yn, my automatically becomes a median, right? But for that you have to prove that this is a parallelogram. But looking at the parallel lines, you can actually understand that. And this is also a parallelogram, right? If you can prove that these two were parallelograms, you can actually say that Zx is also equal to Li and Zx is also equal to Yn. So if Ly is equal to Yn, that means My is a median. Simply you can say that, so you will give the right answer. In this case also, it is the combination of remainder theorem, and you have to apply zeros as well, right? So try to solve this out. It is a simple question based on calculation. You know the sum of roots is minus b upon a, the product of roots is c upon a. You know the roots. You can actually find out b and c in terms of a. Now according to the remainder theorem, you actually applied it, multiply, convert, interchange x with 2, and you will get 12 as the remainder, right? So we will solve it out and change everything b and c with a. You will get a is equal to 2, b is equal to 3, and c is equal to minus 2. You can solve it like that. A is the right answer. Now in this question, this looks very difficult, and it is very difficult if you don't understand such kind of roots, right? 3 minus 2 root 2, if you see such a question, you first of all need to make yourself understand this is some kind of property, some kind of identity which you might be missing. You can see 3 could be written as 1 plus 2, right? And this could be written as 2ab. So this is some kind of identity, and this root can be finally removed. Similar sense you must get by seeing these roots, that these roots can be removed also. Okay. So what I am going to show you will look very different, but if you practice much, you will get an idea that if you square and put a root over it, it will again going to be stay same. It will stay same, right? But squaring will give you an idea that how can you move these square roots first of all. So these bigger square roots are a problem. These smaller square roots are not a problem. You can do rationalization. You are well aware of it. So these bigger square roots can also only be cancelled if I square the complete term. So I have squared the complete term. And if you will solve it out, you will finally get, okay, this is very simple. 2 will cancel, root 5 will get 2 root 5, and then this will again become root 5 square, and you can finally solve it, right? So if you will solve it, you get 1 root 2, and then finally, if you will try to solve this, root 5 plus 1, root 5 plus 1 will cancel, root 2 minus root 2 plus 1, root 2 will cancel, you get n is equal to 1. So n plus 2 will be 1 plus 2, that is 3. So guys, in such type of questions, when you see a bigger square root over all such numbers, you have to apply such a method, right? In this question also, this is a very calculative question, I say. If you have got f0, you have to replace x with 0. If you have got f2, you have to replace x with 2. You have to got f4, you have to replace x with 4. And therefore, you will get 3 equations.
right? He'll get 3 equations and you have to solve it accordingly to find the value of A, B and C. So that's what we have done. F0, F2, F3. Nothing extra is applied. Just look at this. I have solved it using the same thing, right? You will try to solve, put whatever you have got from the 1, you put it into the 2 and put it into the 3, right? What you have got from 1 and 2, put it into the 3. Finally you get, and there is one another thing that, okay, so you can see that C is given as a quadratic equation. C square is equal to 4. So C could be plus minus 2. But there is a hint in the question which says that C is greater than 0. So thus you can actually imagine that what could be the value of C, and if you get a value of C, if you are very sure about the value of C, you can find out other values as well, B and A, and you can solve it, right? Finally you have to find out the value of 2A plus 3B minus 4C, so you can get it finally, right? So I don't think there's too much to explain in this question. The only thing which has to be done is calculation. In this question, okay, this question is very easy, and if you have some sort of idea about all this, you will be actually doing it. So this said that if this be the quotient, if we divide it by a polynomial of degree 5, so that means x to the power 5 would be there, right? X of degree 5. So when you divide, what shall we multiply? Like if just dividing the first term, you can get an idea that this is going to be x. In no way you are going to get power 2 here. In no way you are going to get a power 2. So this cannot be a quotient in any case. So you know the answer, right? B is the right answer. It could be actually determined, and no is the right answer. This again is a very calculative question. You know how to solve such questions. I would rate this as class 8 question. Only thing is you have to be very sure with your calculations. Anyone with clumsy calculation might fall prey to all these questions. But I haven't seen any reason to make this wrong. You can simply solve this, right? And finally you do cross multiplication will give you the very final answer. This is a class 8 question. I will simply say that. So x to the power x, that is 4 to the power 4. This is the only thing the class 8 student might not be able to do, but I think he will be well capable of doing it. So finally you have got root under 256, that is 16. So there is no point of worry in this question. You solve it. Now this is again a very simple question. If you are not, if you're not scared of it, if you get worried while seeing this, this is actually going to take away all your marks. So what you have to do is, you have to simply solve this first. If you solve this first, you'll get beta into alpha in the denominator, and this alpha will go to the numerator, that will become alpha cube to the power 1 upon 3. So you can see that has actually reduced any kind of effort which might have taken finding the value of alpha and beta. So there is no use of finding the value of alpha and beta. So you know the value of alpha plus beta and alpha beta. You'll solve it out, you'll get alpha plus beta upon alpha beta to the cube root of alpha beta, right? So this is 3 to the power 3 upon 8 and 27 upon 8 to the power 1 upon 3. You'll solve it, you'll get 1 upon 4. So there is nothing very difficult in the question. These are the right answer. Anyhow, you got it. This question is a perfect square. So guys, in such questions, you need to understand this is some kind of identity, right? Can I write it as 3x plus root 3 whole square? If you write it like this, what will you get? So you get 3x square plus 3 plus 2 into root 3x into root 3, right? And it is 8a. To be a perfect square, that is going to happen, right? To be a perfect square, that is the only case which can happen, right? X is there, so this is, you just look at this, x is there, so this is 3, root 3 into 3 is 3 into 6. So 6 is equal to 8a, right? It is, we can actually compare these two. So you can find the value of a, that is equal to 3 upon 4. So a is 3 upon 4. Doing a cube will give you 27 upon 64, and then you have to multiply it with 4 also. So this is 16. So yes, C is the right answer. No worries in this question, guys. This is again a simpler question and as well as a very tricky question as well, right? If you try to solve this out, you first have to create it into two identities first of all. So if you get these identities, so you need to understand when we add two positive numbers, there is no case you are going to get a 0. In no case you are going to get a 0 by adding two positive numbers, right? And with negative numbers, that is not a case, right? If one is negative, one is positive, that would be a case. But we can see these are all perfect squares, and perfect squares cannot be negative. So the only case left is both could be 0 at the same time, there only we can solve it. So when we equate each of them to 0, we'll get the values of a and b, and finally we can solve a plus b plus ab, right? So any effort of finding a plus b plus ab through this
will prove fatal and will prove difficult to solve, right? So what you have to do is, first of all, you have to convert this into two equations using identity and then solve it by equating every part to 0 individually. Now this is a very tricky question. So you need to understand that a square minus b square will always have a plus b and a minus b as factors. And no matter what, how much we increase the power and it stays like this, a4 minus b4. So you again know what is this. You will get a square minus b square as a term in it, right? Rest other can be anything, right? Anything which have the same like powers of 2 here. So this will again break into a plus b and a minus b. So that means a plus b and a minus b is always going to be a factor of such an equation which has 2n and 2n as its power. So what you have to do is, so what will be, so it will be divided by n, 9 plus 4 also and 9 minus 4 also. So we can actually conclude that 5 and 13 could both be the factors of this natural number, right? Now this question is also very simple. A cube is given, so you can find out the volume of the cube is given, you can find out the side of the cube, right? You can also find out the diagonal of the cube, and that diagonal is again used to find out a new cube. So guys, that diagonal will be 6 root 2. You completely understand that, right? If it is 216 is 6 cube, the diagonal will be 6 root 2. So what will be the volume of such a cube? The total surface area of the cube. So it will be 6a square. So you just try to solve it. Just look at this. So 6a square in first case was total surface area of the first cube. You have to understand it will be only 216 only, because a square is again 36, right? And this is a root 2, that is 6 root 2. We'll try to solve it out, we'll get 1 upon 2. That is the right answer. C is the right answer. Now this is a big question which I would like to say is but easy one, right? It will take, like, if you are confused in it, you are going to lose too much time and too much marks as well. So what you have to do is, you just have to go through whatever the question is saying and have to find out your results from that only. So what it is saying, Arvind, Vivek, Deepak, in सबकी age को add करके the average you get 80, right? So you can actually find out the sum of the total weights. Weights को add करके. So sum of the total weight you can get. So when Vicky joins, the average is 72. So we can find out the age of Vicky from that, right? Because we are actually aware of the total weight of it, right? So we can find out the weight of Vicky. So if another person, Tanya, is added more than, so 12 kg more than Vicky. So we have found out the weight of Vicky. So we can actually find out the weight of Tanya. So now we can see that already found out the weight of 2 people in the group, right? So similarly, the other equations, like the other information, that average age of Vivek, Deepak, Vivi and Tanya is 82 years, will help us to find out the age of Vivek and Deepak as well using these 2 equations. So guys, there is enough information given in this question to find out all the ages. The only problem which you might get into is getting confused or the calculation error. So you can just look that we have found out the weight of Vicky, the weight of Tanya, and finally again through this question you can find out the age of the difference between Tanya and Arvind as well. So the weight of Arvind, because Tanya's age is known to us. So weight of Arvind is found out. So you can simply see that it is 20 kg. You find out this is the lowest one till now. So you can also play with it, right? Because the question talks about some kind of arrangement, right? You need to understand that which is the smallest weight. You can actually solve these equations before solving all of these by looking at all these information and eliminating options from it. You don't have to do it completely at all. So right, we know that Deepak is going to be highest. So Arvind is at the end of it. We all know, right? So we can simply see in which case Arvind is at the end. So C looks like a case, first of all, right? So that's all with the math section. I can move up to the aptitude section, guys. That's all. Thank you. Hey guys, welcome to slot 2 solutions, slot 2 discussion of aptitude portion. So far we have discussed the science section and math section. So I hope सभी बच्चों का एक बार अच्छा हुआ हो. So in this part, slot 2 का aptitude section करेंगे. Now if you are one of those students जिन्होंने अभी तक GTSE नहीं दिया, then you can definitely appear in the slot 3 of GTSE. And with that, let's get going with the solutions of aptitude portion. I hope सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया हो. जरूर मुझे कमेंट्स में बताना कि how was the paper. And with that, let's get to it. So first 40 questions they were of science and math section, and the last 10 questions are for aptitude. Let's start with that. So 41st question अगर देखिए तो shoulder का आपको कुछ coding दे रखा है, boxing का coding दे रखा है, and we need to find the coding for bond.
So we do not need to find any relation over here. H का मतलब देखो यहाँ से निकल जाएगा, H is the second letter over here, H second letter है, तो H का मतलब क्या है, H is J, H is simply coded as J. O की कोडिंग क्या है, O is coded as S. Similarly, R is coded as Z and N is coded as P. N की कोडिंग है P. तो क्या आ गया, JSZP, दैट्स ऑप्शन ए. तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर ए. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 will the hands of clock be together? वेरी फेमस क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टाइप के. तो अगर आप देखोगे इनिशियली अगर मैं बात करूं एट 8 PM, अगर 8 बजे की हम बात करें तो इस टाइम इन दोनों हैंड्स के बीच में देयर इज 240 डिग्री का एंगल. ठीक है, मतलब कि मिनट हैंड को 240 डिग्री का एंगल कवर करना है. ना इफ यू नो कि यार आवर हैंड क्या कर रहा है, एक घंटे में 30 डिग्री कवर करता है. एक घंटे में 8 to 9 वो 30 डिग्री जाएगा. दैट मीन्स इन 1 minute it covers 0.5 degrees. Similarly, this is for hour hand. Right? Let's talk about the minute hand now. Minute hand क्या कर रहा है, minute hand covers 360 डिग्री in 1 hour. तो हर एक मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा वो, इन 1 minute it covers 6 degrees. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नेट ओवरटेक मिनट हैंड कितना कर रहा है, 5.5 डिग्रीज इन 1 मिनट. अभी कितना डिफरेंस है बीच में, 240 डिग्रीज का, मतलब उसको 240 डिग्रीज कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 240 by 5.5. दैट्स ऑल, ये अपना आंसर है. 240 डिग्रीज कवर करने हैं, एक मिनट में 5.5 करता है, तो नेट 240 के लिए 240 by 5.5 दैट्स 11 by 2. तो ये आ जाएगा 480 by 11 which is nothing but 43.7 by 11. तो बच्चों इसका आंसर आ गया बी. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Which domino comes next in sequence? If you would see कि 6 plus 2 it's odd, यहाँ पर odd है, फिर even है, फिर या फिर जैसे देखो sum, यहाँ पर 6 plus 2 it's 8, then we have 7, 6 plus 1 7, then 5 plus 3 it's 8, 5 plus 2 it's 7, 4 plus 4 it's 8. तो नेक्स्ट सम कैसा आएगा अपने पास, 7 आना चाहिए, which is only true in option A. नेक्स्ट वन, y is then east of x. तो x की ईस्ट में है y and x is in the north of z. that means z आएगा साउथ ऑफ x पे. if p is in south, further south जाना है तो p आएगा. तो y के किस डायरेक्शन में p है, तो p is in साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है p with respect to y, which is option D. मतलब आपको ऑप्शन है नहीं, तब जाएंगे नन ऑफ दिस के लिए. राइट. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग. करिएगा, अगर आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वन बाय वन फॉर ईच ऑप्शन. तो इसमें आप चेक करोगे तो जे आपका डी आपका सही आंसर आ जाएगा. लेट्स चेक दैट. जे प्लस आई, दैट मींस प्लस का मतलब है सिस्टर, जे इज सिस्टर ऑफ आई. लेट्स मूव फर्दर. I minus h, minus के son, that means I is son of h. H into G, H is mother of G, H is mother of G. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, G minus F. G minus F क्या है, X is son of Y, मतलब G is son of F. So G is son of F, H is mother of G. That means H and F are husband and wife. H और F क्या हो गए, husband wife हो गए. I is son of H, मतलब I जो है वो H का बेटा है, मतलब वो F का भी बेटा है. And J is sister of, that means J is daughter of F. J is daughter of F, which simply means F is father of J, which is true for this D option, right? इसका आंसर हो जाएगा D. Next, नीचे the following question, 4 words have been given. If you could see यार, यहाँ पे सारे के सारे अलग है, सिर्फ एक C हिमालय है जो माउंटेन है, रेस्ट आर नॉट. उसका आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट, अगर इसका मतलब ये, इसका मतलब वैल्यूज पुट करनी है. 15 माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई. डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2. डिवाइड का मतलब है प्लस 900, प्लस का मतलब है डिवाइड बाय 90. और फिर फाइनली मल्टीप्लाई का मतलब है
मल्टीप्लाई का मतलब हमारे पास आ जाएगा multiply means minus, so we'll get minus 100. 15 into 2 30, 30 plus 900 by 90, that's 10, minus 100. So 40 minus 100, that's minus 60. D minus 60 is the right answer. Find the missing number. If you would see 1 into 4 फिर minus 2, 4 into 4 minus 2 into 4 minus 2, ये पैटर्न चल रहा है. 2 into 4 8, 8 minus 2 6, 6 into 4 24, 24 minus 2 is 222, into 4 88 minus 2, that's 86. Fine. Next, यहाँ पर आप अगर आप पैटर्न देखोगे, पैटर्न क्या है? पैटर्न है ABC ABC, CBA CBA. तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर इन दोनों में आ जाएगा CA, और A के बाद यहाँ पर C है और लास्ट में A है, तो हमारा आंसर आ गया CA CA, which is option A. लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ग्रैंडर इज NARGRUD, तो अगर आप देखोगे फर्स्ट 4 लेटर्स का उल्टा करा है, GRAN का उल्टा कर दे, तो यहाँ पर भी फर्स्ट 4 का उल्टा कर दो, तो PRES आ गया. सिमिलरली आखिरी का भी उल्टा करना है, तो ERVE, तो हमें आ गया प्रिजर्व PRESERVE. तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है डी ऑप्शन. So that's all was there in your aptitude section. I hope सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया हो. Do let me know in the comment section. And if you have any queries regarding any of those, any of this test or anything about the Goprep, you can reach out to us on the given paper. So that's all from my side. Signing off. Bye bye everyone. I hope you enjoyed the session. Take care.